ಅಮೃತ್ನೋನಿ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್, ನೋವಿಗೆ ವಿರಾಮ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ. रथ भी रेडी है, पथ भी रेडी है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का द्वैतापति भी रेडी है. जो भगवान जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर दर्शन करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, वैकुंठ प्राप्ति होता है. Hopefully I can go and stand right and be able to pull his string a little bit and pull him along. जो तैयारी की बात आप बोल रहे, ये काफ़ी इतना स्पीड और इतना अच्छा से चल रहा है. क्यों? बिकॉज हमारे ठाकुर जी उस लास्ट जस्ट पूर्णिमा से लेके अभी तक बहुत खुश है. महाप्रभु का जो 15 दिन जो जस्ट पूर्णिमा से लेके आषाढ़ अमावस्या तक महाप्रभु बुखार में जो थे, ये जो तैयारी जो चल रहा था और महाप्रभु का जो शरीर का डेवलपमेंट जो चल रहा था वो काफ़ी स्पीड अप चल रहा था. महाप्रभु बहुत खुश है. और अभी आप देखिए रथ भी रेडी है, पथ भी रेडी है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का द्वैतापति भी रेडी है और महाप्रभु जगन्नाथ जी के सारे भक्त समाज भी रेडी है इस भव्य रथ यात्रा के लिए. तो जो तैयारी की बात आप बोल रहे हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी चाहेंगे इस बार का रथ यात्रा नॉर्मल रथ यात्रा के जैसे होगा और सारे भक्त समाज महाप्रभु को भव्य से भव्य दर्शन करेंगे. इसके लिए बोला जाता है रथेषु वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न लभ्यते. जो भगवान जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर दर्शन करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, वैकुंठ प्राप्ति होता है. इसके लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी बहुत दयालु है. Krishna, I'm from Canada and I've come here to see Jagannath today. Beautiful, something we've all wanted to see. He's so gorgeous. Mandir itne so beautiful. So now everyone from Canada, we want you to come visit and look how beautiful Jagannath is here. Mahaprabhu will come outside tomorrow. You will go for darshan something? Yes, I'll be here. Hopefully I can go and stand right and be able to pull his string a little bit and pull him along. But it's up to Jagannath where he lets you come or not, right? You have seen this, all the 3 chariots have been dragged and put on the respective places. It was done very nicely, very smoothly. Absolutely there was no issue. The strength and other things have been checked. It is found very, very good condition. So security arrangements have already been done. Rehearsal has already been done. This time we are going to use this almost 180 platoons of force. Besides, we are having 3 companies of Rapid Action Force and 2 companies of separate CRPF. Our SOG team, Special Operation Groups, are also deployed there to take any type of emergent situation. So all the briefings and rehearsal has been completed. I hope the VIP security is just going on, and we are fortunate our Honorable President is also coming tomorrow. So a dedicated team has also been given. Security blanket is there and in and around Puri town. ನಾವು ಸಲಹಿದ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ. ಅಮೃತ್ನೋನಿ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್, ನೋವಿಗೆ ವಿರಾಮ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ. We have done the mock drill of the chariot dragging. Force and officers have already reported here. Everybody is in a good health of mind.
and absolutely there is no issue. The main tagline of this Rath Yatra is the humane face of police. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.